Hello everyone, here I am going to start with your chapter 5, that is coal and petroleum. Coal and petroleum, it's a very common word. They are considered as resources. Now my question to you, what does the word resources means? Is there any type of resources? Where does these resources comes from? So all of your these questions will be cleared in this video. So firstly, I'm starting with the term resources. What resources means? Resources are basically the materials which have got some value and used to satisfy our needs. Resources क्या हैं? ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी कुछ वैल्यू होती है और इन्हें हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें. In general, resources are categorized into two parts. One is natural resources and one is man-made resources. Natural resources, as the word signifies, the materials which are present in nature or gifted by God. So that are considered as natural resources. These natural resources are useful to us in fulfilling our basic needs. ये natural resources से हम अपनी basic needs को क्या कर सकते हैं, fulfill कर सकते हैं. So the some examples of natural resources are air, water, soil, coal, petroleum, etc. There are many other resources also like plants, animals, minerals. They all are considered as natural resources because they are gifted by God, and or we can say that they are present in nature. Now there is one more category of resources that is called as man-made resources. They are the materials made by human beings. ये किसने बनाया है? ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, सो दैट दे विल डिक्रीज द मैन पावर, जिसमें लोग अपनी खुद की पावर को कम यूज़ करें and the work will complete in a shorter period of time. For example, machines, vehicles, roads, etc. There are many other man-made resources. So in this chapter we are basically focusing on the natural resources. Now natural resources, as I already told you, they are the resources which are present in nature. It is also of two types. One is inexhaustible natural resources and another is exhaustible natural resources. Inexhaustible natural resources means those resources which are present in unlimited quantity in nature. नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं अनलिमिटेड, जिनका कोई एंड नहीं है. दैट आर कंसिडर्ड एज inexhaustible natural resources. They are not likely to be exhausted by human activities. ये human activities के थ्रू कभी भी exhaust नहीं होंगे. So there are some examples of inexhaustible natural resources like sunlight, air, water, rainfall, clay, sand. These all are your inexhaustible natural resources which are not likely to be exhausted by human activities, or we can say that they are not likely to be get ended by human activities. Now we are going towards exhaustible natural resources. These resources are present in limited quantity in nature. ये limited quantity में present है. अब लिमिटेड है तो इट मीन्स देयर विल बी एन एंड ऑफ इट. सो दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड over a certain period of time by human activities. If we are not using them properly, then they will get end up soon. For example, coal, petroleum, forest, your wildlife, your natural gas, these are the things which can get exhausted if they are not used properly. So our major concern is towards these exhaustible natural resources because we have to protect them.
Now, these exhaustible natural resources is also of two types. One is renewable resources and another is non-renewable resources. Renewable, renew होना, it means दोबारा से वो क्या हो सकता है, generate हो सकता है. So, renewable natural resources means that can be replenished themselves by recycling after a period of time. कुछ टाइम के बाद वो खुद से क्या हो सकते हैं, रिप्लानिश हो करके आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं. इफ़ दे आर मैनेज प्रॉपरली दे कैन बी यूज्ड अगेन. अगर आप इन्हें ढंग से मैनेज करेंगे तो आप इन्हें एग्जॉस्ट होने से बचा सकते हैं. और अगर आप एक्सेसिव और अनवाइज यूज़ करेंगे तो दे विल गेट एग्जॉस्टेड, दे विल नॉट बी प्रेजेंट इन योर environment. For example, soil, forest, wildlife, etc. If we are not going to use them in a proper or wise manner, then they will get exhausted. So they all are considered as renewable resources. Now we are discussing about non-renewable resources. Non-renewable resources are basically those which cannot be replenished themselves by recycling. कितना भी टाइम हो जाए, अगर वो एक बार एंड अप हो चुके हैं तो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकते. सो इफ़ इट्स लॉस्ट वन टाइम then it will never come back. It will get lost forever if not managed properly. And the examples are coal, petroleum, and natural gas. So our chapter is basically towards concern of coal, petroleum, and natural gas, which are considered as non-renewable resources. So we have to use them judiciously. हमें इन्हें बहुत ही तरीके से ध्यान से यूज़ करना है, because if we are not going to manage them properly, they will be lost forever. वो कभी भी आपके पास present नहीं होंगे. Now we are going to discuss about some new terms, like one is fuels. What fuels means? Fuels are basically the materials which on burning produces heat, energy or power. ऐसे मटेरियल्स जिन्हें बर्न करने पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है या पावर प्रोड्यूस होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं. ओके, नाउ सेकेंड टर्म इज़ फॉसिल्स. व्हाट फॉसिल्स आर? फॉसिल्स आर बेसिकली the remains of dead plants and animals which are buried under the earth for the millions of years ago. कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जिनके डेड रिमेन्स जो हैं वो अर्थ के अंदर बरी हो चुके हैं, यानी कि दब चुके हैं, और उन्हें दबे हुए कम से कम मिलियन ऑफ ईयर्स हो चुके हैं. नाउ दे आर कंसिडर्ड एज फॉसिल्स. So your coal, petroleum, natural gas, these resources are your fossil fuels. Now you can imagine if they are not used in a proper manner, how much time will they take to come back on this planet? That is million of years. Can you imagine? If we are not using them properly, how much time we have to wait for these resources? So we have to use them in a very judicious manner. These coal, petroleum and natural gas are considered as fossil fuels because they are formed from the dead remains of plants and animals which are buried under the soil or are buried under the earth for million of years. जो मिलियन ऑफ ईयर्स तक के लिए अर्थ के अंदर दबे रहते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ योर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज ये दोबारा से रिप्लानिश नहीं हो सकते हैं. सो my advice to all of you is that we have to use them in a very proper manner and in a very judicious manner. So now we are starting with one of our fossil fuel, that is coal. As I told you, coal is a fossil fuel because it is produced from the dead remains of plants and animals. Now we are starting with its structure.
It is hard as like a stone. It is black in color. बिल्कुल ब्लैक होता है कलर में. इट इज़ फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये कहाँ मिलता है? जो कोल माइंस हैं वो अर्थ के बहुत ही नीचे गहराई में प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ कोल बेड्स. कोल के बेड की फॉर्म में. देयर आर मेनी स्टेट्स इन इंडिया वेयर कोल इज़ फाउंड, दैट आर बेसिकली बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश. As I'm saying every time that we have to use these fossil fuels in a very judicious manner. Why? Just because coal is used in making of food. खाना बनाने के लिए कोल का यूज़ किया जाता है. In earlier times, railway engines work on the basis of coal, but now we are having the electricity system. Now these electricity can also be produced from thermal power plants in that coal is used. So the coal is very important. Now how does this coal generate? कैसे बनता है? So there is a story of coal. Coal कैसे बना? It's a story of about 300 million years ago. The earth had a very dense forest. अर्थ का एक बहुत ही dense forest था. उस डेंस फॉरेस्ट के अंदर कुछ नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि फ्लड आया. अब उस फ्लड की वजह से क्या हुआ? वो सारा का सारा फॉरेस्ट गॉट बरिड अंडर दी सॉइल. सारा फॉरेस्ट सॉइल के अंदर दब गया. नाउ इफ द होल ऑफ योर फॉरेस्ट इज बरिड अंडर द सॉइल, देयर इज बेसिकली इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ज़्यादा टेम्परेचर है और प्रेशर भी ज़्यादा है. बाय दिस देयर इज़ ग्रेजुअल डिके एंड कंप्रेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एज वेल एज योर सम स्मॉल एनिमल्स. बेसिकली तो प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं जिनका क्या हुआ? डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ. धीरे धीरे वो क्या होते गए? डिकम्पोज होते गए. एंड देयर इज़ एब्सेंस ऑफ एयर. वहाँ पर एयर भी प्रेजेंट नहीं थी. This leads to formation of coal. उससे क्या बना? कोल बना. So basically it's a very slow chemical process in which conversion of dead vegetation is occurring. जो आपका dead vegetation है वो पूरा का पूरा डिकम्पोज हुआ और उससे क्या प्रोड्यूस हुआ? कोल. But under the absence of air and having a very high temperature and pressure, it leads to formation of coal, and this process is called as carbonization. Now when we burn this coal, it leads to production of carbon dioxide. जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है and it is very suffocating. उसमें suffocation फील होती है. Why? Just because that contains carbon dioxide. Because कोल जो है उसके अंदर किसके अमाउंट प्रेजेंट होती है? कार्बन की. और कार्बन को जब हम बर्न करेंगे तो इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन and leads to formation of carbon dioxide. So this is about the story of coal. Now there are some products which are formed on heating of coal. जब हम कोल को हीट करते हैं in the absence of air and it's a very strong heating, बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, so it leads to production of some other products which are called as coke, coal tar and coal gas. These are done in industries and this process is called as destructive distillation. जो आपका कोल है जब उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो उससे 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, दैट इज़ कोक, कोल तार एंड कोल गैस. दिस इज़ डन इन द एब्सेंस ऑफ एयर. Now we are going to discuss about these products. So first one is your coke. What coke is? This is a tough, porous and grayish black substance. As you can see in the picture, this is your coke. This is the pure form of carbon. इसमें कार्बन की प्योर फॉर्म प्रेजेंट होती है and it is about containing 98% of carbon. 98% कार्बन कोक के अंदर प्रेजेंट होता है. Now where does this coke is used? ये कोक हम कहाँ यूज़ करते हैं? Coke is used as an essential raw material for iron and steel industries. वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है.
Now, it is also used as a reducing agent in extraction of metals from their ores. जो खदानें होती हैं जहाँ से मेटल को निकाला जाता है, उसमें भी किसका यूज़ किया जाता है? कोक का यूज़ किया जाता है. This coke is also used in manufacturing of producer gas and water gas. इससे ये दो different gases भी produce की जा सकती हैं, that is producer gas and water gas. Producer gas is the combination of carbon monoxide and nitrogen. Water gas is the combination of carbon monoxide and hydrogen. So this is all about coke. Now we are moving towards the other product, that is coal tar. Coal tar क्या होता है? This is a black viscous thick liquid. ये black liquid होता है जो कि बहुत ही गाढ़ा होता है. You have seen this product earlier in your childhood, like it is used in the formation of roads. रोड बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था. It is having a very unpleasant smell. उसकी smell बहुत ही गंदी होती थी. So nowadays this coal tar is not used in the formation of roads or in making of roads. So now इसकी जगह क्या यूज़ किया जाता है? Bitumen यूज़ किया जाता है. This is a petroleum product. Earlier we are using a coal product. Now we are using the petroleum product for the making of roads. This coal tar is a mixture of more than 200 different carbon compounds. इस कोल तार के अंदर 200 से भी ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और उन कार्बन कंपाउंड से हम और भी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि डाइज बनाते हैं, पेंट्स बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं. उन सब को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द burning of coal, that is coal gas. This is obtained during the processing of coal. जब हम processing करते हैं कोल की तो coal gas produce होती है and it is consisting of 3 combustible gases. इसके अंदर 3 combustible gases present होती हैं, that is hydrogen, methane and carbon dioxide. ये सब इसके अंदर present होता है and on burning it produces heat. जब इसे burn किया जाता है तो ये heat produce करता है and it is also considered as an excellent fuel. So this is all about today. In this we have discussed about one of our major renewable resource, non-renewable resource, that is coal, and its products formed on heating. That's all for today. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe and share.